Okay, so it's working now. Assalamu alaikum, everyone. I hope you guys are all doing well. Uh, we are starting this paper today, March 2021, paper one. ये paper हम आज करने हैं, inshallah. But just a couple of announcements before we start. एक तो, I'm sorry for being late today. I wasn't home, and it's probably going to be like that for the next couple of days. कि रात के time पे I might not be available at our regular time that we have. So what I want to do for the next few days is I will be announcing the time for every single day as we go. So for those of you watching YouTube, what I'll do is I'll schedule the session beforehand ताकि वो time वहाँ पर आपको पता चल जाए कि किस time हम start कर रहे होंगे. I'll also post on the community tab, but I'm not really sure if a lot of people see that. But in any case, I'll be scheduling sessions beforehand, तो उससे आपको time का पता चल जाएगा. Secondly, it's not necessarily going to be at night anymore for the next few days at least. Paper one वाले जो sessions होंगे, they're not going to be at the same time. एक तो जो मुझे टाइम लग रहा है जो शायद हम कर रहे होंगे अराउंड 3:30 PM इसके आसपास इंशाल्लाह कर रहे होंगे, और या फिर हो सकता है 8:30 और 9 PM के आसपास. ठीक है, but most likely inshallah it's going to be more than one session a day now because we only have like 3 days to go. तो हमने 2020 वाले पेपर्स कोशिश करनी है कि मैक्सिमम कर लें वो भी सारे. तो उसके लिए we might need more than one session a day. So we will try to have that apart from the Eid day. Eid वाले दिन क्लास नहीं होगी, लेकिन ईद के अलावा we will have these sessions on all other days inshallah. All right. ठीक है. So that was just what I wanted to communicate before we start. Now we can start this. This is March 2021, paper one. ये paper start करें. Again, do give yourself a reminder that you've got to show all working को skip बिल्कुल नहीं करनी है. और जो आपके working के अंदर कोई भी numerical answers आ रहे हैं, you have to have them at least to four significant figures. 4 significant figures से आपने कोई value कम नहीं रखनी. ठीक है? All right, let's begin. March 2021 paper. Let's start with the first question. Achha, we have to find the first 3 terms in the expansion and ascending powers of this 1 plus x whole raised to power 5. Now you'll have the formula sheet in front for this. I'll just write down the formula here. 1 plus x. In fact, this is an integer, a positive integer. So we use that formula, a plus b whole raised to power n. Paper 1 वाला formula basically ये होता है. Paper 1 में ये formula use करते हैं. A raised to power n plus nc1 a raised to power n minus 1 into b plus nc2 a raised to power n minus 2 b square and so on all the way until b raised to power n. So this formula के अंदर values input करनी है. What do you have here? You've got 1 plus x whole raised to power 5. If you compare the two, in place of a you've got 1, in place of b you've got x, and in place of n you've got 5. बस formula के अंदर values input कर दें. a की जगह पे 1 input कर दें. That's 1 raised to power 5 plus nc1, so that's 5c1 into 1 raised to power 4 into b, b is x, plus 5c2 into 1 raised to power 3 into x whole square. This is what we've got. You only needed the first 3 terms. You don't have to go any further. इसको simplify कर लें, देखना कि पास क्या आ जाता है. You get 1 plus 5x plus 10x square. That's going to be the expansion. ठीक है, आपके पास first 3 terms आ गया. इसकी that's just 1 mark because it's really just very straightforward. Okay, let's try the next one. Now it says find the first 3 terms in the expansion in ascending powers of x of 1 minus 2x whole raised to power 6. हमें इसको expand करना है. Again, it's a binomial expansion, so we use the same formula again. 1 minus 2x whole raised to power 6. Now a in this case is 1, just like before. b is minus 2x. Sign आपने साथ रखना है. Minus 2x ये पूरा आपका b है. And n is 6. Again, just input values. A की जगह पे 1 डाल दें. That's 1 raised to power 6 now. Plus nc1. Now n is 6. 6c1 into 1 raised to power 5 into minus 2x whole raised to power 1. ठीक है, minus आपने साथ लिखना है यहाँ पे. And then you've got 6c2 into 1 raised to power 4 into minus 2x whole raised to power 2.
ठीक है, ये आपकी expansion होगी, the first three terms. Now you just have to simplify this. 1 raised to the power 6 is 1, 6c1 is 6. लेकिन यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन की 1 पावर है, so आपके पास बाहर माइनस आ जाएगा. You get -6, or let me just do it one more step just to be clear. Plus 6 into -2x. 6c2 क्या होता है? Can somebody just tell that to me very quickly? I think it's 15. Can you just confirm 6c2 is 15? Yes, that's correct. So 15 into -2x whole square, that's going to be 4x square. And now you simplify this, you get 1 minus 12x plus 6tx square. That's what we get here. ठीक है, ये आपके पास second part हो गया इसका. Let's move on to the next one, part C. It says, hence find the coefficient of x square and the expansion of 1 plus x whole raised to power 5 into 1 minus 2x whole raised to power 6. अब जो ऊपर वाली expansions की थी आपने वो use कर रहे 1 plus x whole raised to power 5 and 1 minus 2x whole raised to power 6. They've already made you expand up to the first three terms and you already have the x square term in both of them. x square का coefficient चाहिए आपको, x square तक आपने expand कर लिया दोनों. All you have to do is you've got to write down those expansions here. 1 plus 5x plus 10x square, and the other is 1 minus 12x plus 6tx square. ये आपका product है. Now what are we looking for? We're looking for the coefficient of x square. We're looking for the coefficient of x square. Now, how do you get x square here? You can multiply. So एक तरीका तो ये पूरा का पूरा multiply कर दें. You'll have 3 terms into 3 terms. That's going to be 9 terms in total. You can do that. आप पूरा multiply कर लें. उसके बाद देखें x square वाली terms कौन सी आती हैं. But it's going to be more efficient to do that thinking beforehand कि x square वाली terms आपके पास कहाँ से आएंगी. So for example, ये 1 जो है constant किस term से multiply होगा तो आपको x square वाली term मिलेगी. Constant को multiply करेंगे x square वाली term के साथ. So 1 is going to be multiplied by 60x square. And then 5x, x वाली term से multiply होगी, x into x आपको x square मिल जाएगा. So you have 5x into minus 12x. And then finally you got 10x square into 1. ये 3 आप multiplications कर लेंगे तो आपको x square का coefficient मिल जाएगा because that's the only way you can get x square. 1 into 60x square plus 5x into minus 12x plus 10x square into 1. Just evaluate this and simplify this. You get 60x square minus 60x square plus 10x square, and we get 10x square from this. उसने आपको क्या कहा था? उसने आपको कहा था find the coefficient of x square. So it's better to write just the coefficient. You'll say this is 10. 10 is the coefficient of x square. ये आपको लिखना है. That's your final answer. अगर उसने पूछा होता कि term in x square बताएं, then you would write the whole thing 10x square, but you're only looking for the coefficient of x square. x square के साथ कौन सा number लिखा हुआ है? That is 10. You will write 10 there like this. ठीक है? All right, let's move on to the next one. Next we've got yeah, so that's the first question done. इसका कोई और part नहीं है. Let's look at the second question. It says by using a suitable substitution, solve this equation. 2x minus 3 whole square minus 4 into 2x minus 3 whole square minus 3 equals 0. अब उसने आपको हिंट दे दिया कि आपको कोई सब्स्टिट्यूशन यूज करनी है, राइट? यस, that's a good suggestion. अब देखें आपके पास क्या आ रहा है. 2x minus 3 whole square है, यहाँ पे 2x minus 3 whole square है. If you were to expand this and simplify, आपके पास एक quartic equation आ जाएगी. Quartic equation, right? 2x minus 3 whole square क्या होता है? That's basically 4x square minus 12x plus 9. और ये नीचे भी आपके पास वही आ रहा है. जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा जाके, तो आपके पास एक x raised to power 4 टर्म आ जाएगी, एक x क्यूब टर्म आएगी, एक x स्क्वायर टर्म आएगी, एक x टर्म आएगी, एक कांस्टेंट आ जाएगा, और राइट साइड पे आपके पास फिर 0 आएगा जो इक्वेशन बनेगी. You don't know how to solve equations like these. आपको solve करनी आती नहीं है. Quadratic equations हमें solve नहीं करनी आती directly. अगर वो इस फॉर्म की हो जिसमें आपके पास x क्यूब भी आ रहा है, x भी आ रहा है, it's going to be pretty complicated.
although it's possible कि वो हो सकता है वो कैंसिल ही हो जाती हूँ बाकी टर्म्स और टर्म्स, बट उसने कहा सब्स्टिट्यूशन यूज करें। सब्स्टिट्यूशन हम क्या यूज कर सकते हैं, ये जो अंदर लिखा हुआ है स्क्वायर के, if you substitute that with another variable, so use any other variable that's not used in the question already. You can use any other letter. Let's say m equals 2x minus 3. What does that become? That becomes m square minus 4 over m square minus 3 equals 0. आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है। अब इसका फायदा क्या होगा? If you were to multiply m square now with the whole equation, what do you get? आपने फ्रैक्शन खत्म करनी है ना, फ्रैक्शन खत्म करने के लिए आपने m square से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, you get m raised to the power 4 minus 4 minus 3m square. And now you see this is an equation that is of a quadratic form. Although it's quartic equation, इसमें x की पावर आपकी पावर 4 आ रही है मैक्सिमम, लेकिन इसको हम as a quadratic treat कर सकते हैं. Why? Because the ratio of the powers is 2:1. जब भी powers आपकी 2:1 के अंदर होती हैं, आप उसको as quadratic treat कर सकते हो. What do we do in this case? अब हम यहाँ पे एक और substitution use करेंगे. I would say m square जो है इसको कुछ आप और substitute कर दें. Let's use another variable now. Let's say u equals m square. Although यहाँ पे आप directly करना चाहते हैं तो आप कर सकते थे square से factorize, but let's make it simpler. इसको आप कुछ और assume कर लें. Let's say u equals m square, and now this becomes a quadratic equation. It's u square minus 3u minus 4 equals 0. That's a quadratic equation, and you know how to solve these equations. इसमें हम factorization कर सकते हैं, or can we? 4 factors 2 don't work. Yeah, 4 and 1 use कर सकते हैं. 4u plus u minus 4 equals 0, and that gives me u into u minus 4 plus 1 into u minus 4. Make sure that you show the working for solving this quadratic equation. That's also a good idea. Yeah, so Iman, that's a good idea as well. That would have been quicker. आप ये कर सकते थे कि आप 2x minus 3 whole square को पूरे को substitute कर लें किसी और variable के साथ, and that would so that way you would not need to use another substitution here. So that's a good idea. You could do that. That will also work. You're right about that. So there's a suggestion that you could just do m square, or in fact m equals 2x minus 3 whole square. You could use that whole substitution here. आप इस पूरे को किसी और चीज से substitute कर सकते थे. Yeah, so that also works, and that would save you a few steps. That's good. Achha. So let's say we have done it this way. हमारे पास क्या आ गया? We get 2 factors, u plus 1 into u minus 4, that equals 0. U equals minus 1 or u equals 4. Okay, ये आपके पास values आ गई. अब हम backward जाना शुरू करते हैं कि अब हमने substitutions किए हैं. अब हमें वापस तो हमें तो x की value चाहिए ना, हमें value तो x की चाहिए. We want to get the value of x now. Now what was u? U was m square. Let's input that here first. M square equals minus 1 or m square equals 4. अब m square minus 1 तो हो नहीं सकता. This is not possible. Okay, so we say this is not possible. M is supposed to be a real number. We're not dealing with complex numbers yet. So this is not possible. M square equals 4 है, तो यहाँ पे क्या possibilities आ गई? Either m equals 2 or m equals minus 2. ये दो possible values आपके पास आ गई n की. Now what was m? M was 2x minus 3. M was 2x minus 3. अब यहाँ पे वो input कर दें. 2x minus 3 equals 2. 2x minus 3 equals minus 2. What do we get from this? We get 2x equals 5, and that gives us x equals 5 over 2. And from this, we get 2x equals 1 and x equals 1 over 2. ये दो values आपके पास x की आ रही हैं. Let's just look at the question again. Yeah, both of them are possible. इसमें कोई मसला तो नहीं है किसी के अंदर. Yeah, so these are the two values of x that we're getting. X equals 5 over 2, x equals 1 over 2. So it's a good habit to just check your answers once के input करने के बाद कोई मसला तो नहीं आता उनसे.
फॉर एग्जाम्पल लाइक हम पेपर 3 में देखते हैं लॉग्स के वाले क्वेश्चंस के अंदर कुछ आंसर्स जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, मॉडुलस में हमें चेक करना होता है। यहाँ पे भी इट्स अ गुड हैबिट कि आप एक दफा देख लिया करें कि डू द वैल्यूज मेक सेंस। उस तरफ से कोई डोमेन दी होती है यहाँ पे कि अच्छा x हैज टू बी लेट्स से ग्रेटर देन 1 लेट्स सपोज, तो उसमें फिर एक वैल्यू हो सकता है इग्नोर हो सकती थी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उस तरह की कंडीशंस को मिस कर जाते हैं एंड पे, एंड दैट मेक्स यू लूज 1 मार्क। Okay, so you get these two values of x equals 5/2 or x equals 1/2. ये आपके पास दो values आ गई। These are the solutions of this equation. ठीक है? All right. Just to say that again, this is another possibility कि आप start में ये वाली substitution कर लेते m equals 2x minus 3 whole square, and that would save you a couple of steps. और उससे थोड़ा सा शायद जल्दी आ सकता था, right? So that's another idea as well. Okay, let's move on. Question number 3. Now it's trigonometry. We have to solve this equation. Tan theta आ रहा है, इसमें sin theta आ रहा है, इसको solve करना है। Solve करने का मतलब होता है जो unknown है, variable आपके पास यहाँ पे theta है, उसके values पे grab करनी है। Now what do we have here? We've got tan theta plus 2 sin theta over tan theta minus 2 sin theta equals 3. What I'm going to do is I'm just going to multiply this there with 3. What do we get from that? We get 3 tan theta minus 6 sin theta. Let's take everything to one side and see what that gives us. Like on my left side, that's going to give me minus 2 tan theta plus 8 sin theta equals 0. Now, if I simplify this, I get minus tan theta plus 4 sin theta equals 0. Now, remember, whenever we are solving trigonometric equations, what do we want to do? We basically want to have only one type of trigonometric function. Only one type of trigonometric function. Agar multiple functions are तो उसको आप convert करते हो एक type of function. So what can we do here? What we can do is we can convert tan to sine over cos maybe. That might help. Right? अगर इसको हम tan को convert कर दें sin over cos के अंदर, उससे हमारे पास कुछ आ सकता है। That's one idea. या फिर आप ये कर सकते हो कि अगर इसको वहां पे लेकर जाएं, that's not going to be helpful. Let's just change tan with sin theta over cos theta and let's see what that gives us. Sin theta over cos theta plus 4 sin theta equals 0. What do we do now? What we can do now is we can actually take sin theta common. Sin theta common ले लें, right? अगर हम sin theta common ले लेते हैं, what are we left with inside? We're left with minus 1 over cos theta plus 4 equals 0. Okay? ठीक है? अब यहां से हमारे पास क्या आ गया? यहां से हमारे पास आएगा either sin theta equals 0, that's one possibility, or minus 1 over cos theta plus 4 equals 0. ठीक है? Let's simplify this as well. What do we get from this? We get 1 over cos theta equals 4. If I take 1 over cos theta to the right side, ये दोनों sides positive हो जाएंगी. And that gives me cos theta equals 1 over 4. ये मेरे पास दो equations आ गई, sin theta equals 0 और cos theta equals 1 over 4. अच्छा, now what do we get from the first case? Sin theta equals 0. इससे हमें क्या मिलेगा? Now remember, ये जो इस तरह की values होती है ना, जहाँ पे sin theta 0 आ रहा है या 1 आ रहा है या -1 आ रहा है, इसको हम quadrants वाले मेथड से नहीं करते, है ना? इसको हम quadrant वाले मेथड से नहीं करते. You either think of the graph of sin, that's one idea. अब देखें ग्राफ, sin के ग्राफ पे 0 कब आ रहा होता है? sin के ग्राफ पे 0 कब आता है? 0 से स्टार्ट होता है, फिर 180 पे 0 होता है और फिर 360 पे जाके 0 होता है. 180 पे 0 हो रहा होता है, 0 पे 0 होता है और 360 पे 0 होता है. What's the range that you're given? What's the interval that you're given? It's from 0 to 180, and 0 and 180 are not included. दोनों included नहीं है. 0 और 180 के दरम्यान में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे आपके साइन की वैल्यू 0 हो रही है. So you don't get any solution from here. You say this is not possible. This is not possible within the given domain. उसके अंदर ये possible नहीं. So this is the other possibility that we've got. Cos theta equals 1 over 4. अब इसे क्या करेंगे? Basic angle find कर लेंगे.
बेसिक एंगल देखें क्या आता है इसका डिग्रीज में, cos alpha equals 1/4. What's the basic angle? Cos inverse of 1/4. It means to evaluate this, it has to be in degrees. Keep that in mind. Cos inverse of 0.25, that's giving me 75.52. 75.52. Now we think of quadrants. आप कौन से quadrants में हो सकते हो? Since cos is positive, cos positive कहाँ पर होता है? Cos is positive in the first quadrant or in the fourth quadrant. But again, if you look at the interval that's given, 0 to 180, fourth quadrant में तो हम जा नहीं सकते. That's not possible. We only have the first quadrant. So basically, first quadrant में आपके पास angle वही आ रहा है जो लिखा हुआ है वहाँ पे, theta equals 75.5 degrees. You can write 5.2 if you want, or you can round it off to one decimal place for angles in degrees. This is your final result. Okay, that's your theta 75.5 degrees. Why can't we use 0 and 180 degrees? Because you see, 0 and 180 are not included. उसमें equality का sign नहीं है. अगर होता 0 and 180 would have been two more solutions for this as well. वो भी इसका solutions होते हैं, 0 and 180. In fact, they might not have been. अगर वो included होते भी, फिर भी वो नहीं होते solutions. The reason for that is आपके पास यहाँ पे denominator में 0 आ जाता. Denominator में 0 आ जाता. Denominator में 0 आ जाता, that they would not work. अगर 0 180 included होते भी, तो आप 0 180 आंसर्स नहीं लगते, because यहाँ पे आप input करते हो अगर इसके अंदर, you basically get 0/0 and that's undefined. अगर वो आते भी solution, तो आप उनको include नहीं करते. But hey, that's something that's slightly advanced. You mostly don't have to do something like that. Dividing by sine theta, आप कर सकते थे. You could divide by sine theta, but whenever you're dividing by sine or cos, remember, you have to be mindful of the fact कि उनकी value 0 नहीं हो सकती है. Sine theta से divide कर रहे हैं, then you have to make sure कि sine theta 0 नहीं हो सकता. ठीक है? And then you can do that. You are basically assuming in that case कि sine theta की value 0 नहीं हो सकती. फिर आप divide कर सकते हो. Okay? Yeah, so they've given that here because ये 0 और 180 interval है. इस case में हमें पता है sin 0 नहीं हो सकता. यहाँ पे आप division कर सकते हो. यहाँ पे they will work. That will work. But generally we have to be a bit careful. Okay, I hope that makes sense. Let's move on to the next one. That was question number 3. इसका हमारे पास ये solution आ रहा है, theta equals 75.5 degrees. Okay, question number 4. A line has equation y equals 3x plus k, and a curve has equation y equals x squared plus kx plus 6, where k is a constant. Find the set of values of k for which the line and curve have two distinct points of intersection. Now, this is a pretty standard quadratics का question. Two distinct points of intersection की बात हो रही है. एक quadratic equation function दिया हुआ है, एक linear function दिया हुआ है. क्या करेंगे? Point of intersection find करने वाला process follow करेंगे. क्या करते हैं? दोनों को equate कर देते हैं. Right? That's what you do. How do you find points of intersection? You equate the two functions. उनको simultaneously solve करते हैं. Let's do that process. We equate 3x plus k and x squared plus kx plus 6. इस तरह से आप इनके points of intersection find करते हैं, if you had to. But then they have told you they are supposed to be two distinct points of intersection. If there are two distinct points of intersection, that means इस equation का जो discriminant होगा b square minus 4ac, that is going to be greater than 0. वो आप यहाँ पे use कर लेंगे. Now, in order to be able to use that, you want the equation to be in this form. आपको ax square plus bx plus c equals 0 इस form में convert करना पड़ता है. ठीक है, हमने सब चीजें लेफ्ट पे तो ले ली हैं, लेफ्ट पे तो हम ले गए सब सारी टर्म्स को, बट नाउ वी नीड द कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर, x एंड द कांस्टेंट. x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो नजर आ रहा है आपके पास, यहाँ पे 1 है. x का कोएफिशिएंट क्या होगा? What you can do is you can just take this common, x common ले लें, you get k plus 3 and then x here, and then the constant is 6 minus k. That's the constant. Now it's going to be easier if you just write it down. अब किस चीज को आपने क्या assume किया? a की जगह पे आपके पास 1 आएगा. b is minus into k plus 3. Do not forget the minus sign there.
and then C is 6 minus K. That's 6 minus K. अब आप discriminant के अंदर ये चीजें input कर दोगे. You are basically using the fact that discriminant should be greater than 0. Now what's B? B is minus into K plus 3. Minus into K plus 3, तो उसका square कर दिया. Okay. Then you have minus 4 into 1 into 6 minus K. That should be greater than 0. Now, this is the negative sign. इसका square करना है, तो ये negative sign तो खत्म हो जाएगा. Basically, हम K plus 3 को square कर देंगे. And that's going to give us K square plus 6K plus 9 minus 24 plus 4K greater than 0. And now we've got a quadratic inequality because we've got K square plus 10K minus 15 that is greater than 0. ये quadratic inequality आ गई है. अब आपको एक quadratic inequality solve करनी है. How do we solve quadratic inequalities? हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? We treat this as an equation. We treat this as an equation और इसके intercepts find कर लेते हैं. ठीक है? So we treat this as an equation and find the intercepts. Let's do that. K square plus 10K minus 15 equals 0. How do you find intercepts of this? 15 के factors, can we actually factorize this? It doesn't look like we can factorize this. Mostly आप इस तरह case में factorize कर सकते हो. I just want to check इसमें कोई हमने कोई error तो नहीं किया कहीं पे. X square plus kx plus 6 equals 3x plus k. Yeah. So when we have this here, यहाँ पे plus होना चाहिए था. I wrote negative there by mistake. Now again, how did I figure out कि कोई मसला हो रहा है यहाँ पे? Generally इसके answers, इस तरह के questions के answers पे end पे आपके पास integers या फिर fractions आ रहे होते हैं, factorize हो सकते होते हैं. Quadratic formula आपको बहुत rarely use करना पड़ता है quadratic inequalities के अंदर, right? So if you get to a stage like this, it's better to just check कि अच्छा अगर आपका factorize नहीं हो रहा है end पे quadratic inequality case के अंदर, it's very likely कि आपने कोई ना कोई error किया है. And if I just look back at this, यहाँ पे plus था, मैंने यहाँ पे नीचे minus लिख दिया उसको गलती से. I need to correct that. This should have been plus here. If that is plus, we are going to have plus outside here, and this should be negative 3 inside. And then B is actually K minus 3. This should have been K minus 3. I need to correct this and this. Sorry about that. This is K minus 3 whole square, and that gives us K square minus 6K plus 9. And from this we get K square minus 6K plus 4K, that is minus 2K, plus, no, minus 15, that is greater than 0. Now let's think about this. Can we factor this now? 15 factors, we can use 5 and 3. So that's K square minus 5K plus 3K minus 15 greater than 0. We can use these factors. Okay. Now, how do we solve this quadratic inequality? In fact, इसको हम अभी से equation treat कर लेते हैं. Quadratic inequality को कैसे solve करते हैं? हमने कहा था हम इसको as an equation treat कर लिया करेंगे. उससे intercept find कर लेंगे. So I'm going to treat this as an equation first. Otherwise, मसला ये होता है इसमें ना अक्सर end पे mistake कर देते हैं बच्चे. I'll tell you what exactly that mistake is. But first, I'm going to treat this as an equation. I'll say this is K square minus 2K minus 15 equals 0. ये equation हम solve करेंगे पहले. यहाँ से हमें क्या मिलेगा? We'll get two factors, K minus 5 into K plus 3. ये दो factors आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. Again, it's necessary to show this process. ये आपने show करना है. K की दो values आपके पास यहाँ से K is equal to 5 or K is equal to minus 3. Now, if you keep using the greater than sign here as well, it's very likely कि आप end पे वो एक common error कर देंगे. आप कहेंगे अच्छा, since this product is greater than 0, you might just end up writing K greater than 5 and K greater than minus 3 here, and that would be wrong. वो नहीं आपका सही होएगा. ये नहीं कर सकते यहाँ पे. इसलिए आपने क्या करना है? Intercepts find करने हैं पहले, and then you're going to think of the graph. आप graph का सोचेंगे फिर. This is how the graph is going to look like.
इसके इंटरसेप्ट्स क्या आ रहे हैं आपके पास? -3 and 5. These are the intercepts. Now it says this function is greater than 0. तो ये ग्राफ आपका x एक्सिस के ऊपर यानी पॉजिटिव साइड पे कब किस रीजन में आ रहा है? देखिए लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आ रहा है और एक राइट साइड पे यहाँ पर आ रहा है. So what values of x, what values of k does that correspond to? ये लेफ्ट साइड वाला रीजन, इसका राइट साइड वाला रीजन. You'll say your final result is k less than -3 or k greater than 5. दोनों के साथ ग्रेटर का साइन नहीं लगा के आ जाना, ग्राफ से देखना है इसको हमेशा. ठीक है, this is your set of values of k that satisfies the given condition there. ठीक है, that's question number 4. I hope that makes sense to everyone. Let's move on to the next one now. Okay, question number 5. Now this is transformations. Figure से आपको पता चल रहा है. In the diagram, the graph of y equals f of x is shown with solid lines. The graph shown with broken lines is the transformation of f of x. So basically, ये graph transformer के ऊपर वाला graph बन गया. ठीक है? Describe fully the two single transformations. So they're saying there are two transformations that are happening. Two single transformations of f of x that have been combined to give the resultant transformation. Okay. Now think about this. Is this transformation horizontal or vertical? Horizontal or vertical? आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है, राइट में भी जा रहा है और वर्टिकली भी मूव कर रहा है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. वर्टिकल भी हो रहा है कुछ और हॉरिजॉन्टल भी कुछ हो रहा है. नाउ लेट्स थिंक अबाउट बोथ ऑफ देम. सबसे पहले आप क्या सोचेंगे, क्योंकि जैसे वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, पहले वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले स्ट्रेच होती है, उसके बाद आपकी स्ट्रेच और रिफ्लेक्शन होती है, उसके बाद आपकी ट्रांसलेशन होती है. राइट? ऑर्डर जो आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है वर्टिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, दैट इज दैट स्ट्रेच हैपेंस फर्स्ट और रिफ्लेक्शन, इन दोनों में से कोई भी, एंड देन यू हैव ट्रांसलेशन. सबसे पहले आप स्ट्रेच का सोचें. वर्टिकल देखिए ग्राफ, इसकी हाइट क्या है? पहले इनिशियली द हाइट ऑफ द ग्राफ इज 1 यूनिट. व्हाट अबाउट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन? वर्टिकली आपका ग्राफ कितना हो गया? इट्स 3 यूनिट्स. आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग the graph has a height of 3 units. ठीक है, तो ये 3 से आपका मल्टीप्लाई हो गया every length on the graph that's basically multiplied by 3 vertically. Vertical length की बात करें, vertically a graph by a factor of 3 stretch हो गया. So that's one transformation that's happening. We can say this is a vertical. It's a vertical stretch with scale factor 3, right? 3 times हो रहा है ना vertically. एक आपकी ये transformation होगी. अच्छा. Now you could write vertical stretch here, or you could say stretch parallel to y-axis. Both of those prescriptions are fine. That's one transformation. अच्छा, आप सोचते हैं कि अच्छा अगर ये stretch हो गया, उसके बाद फिर आपको क्या ग्राफ के साथ और करना है? सो इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल इफ यू कैन ड्रॉ एन इंटरमीडिएट ग्राफ आफ्टर दिस, कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका ग्राफ कैसे लगेगा, ये स्ट्रेच करने के बाद आपका ग्राफ कैसा आएगा. वंस यू आर डन विद द स्ट्रेच, अब देखें ये जो पॉइंट 1 यूनिट दूर था एक्स एक्सिस से, ये अब कितना दूर हो जाएगा? 3 यूनिट्स. सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू गो 1 2 3. इट्स गोइंग टू गो एट दिस पॉइंट. ये आपका पॉइंट, लेट्स कॉल दिस समथिंग, लेट्स कॉल दिस ए पॉइंट आपका यहाँ पे चला जाएगा. व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? ये भी 2 पे है vertically. It's going to get multiplied by 3 and it's going to go to 6. And similarly this point, इसका जो y coordinate है ये भी 2 है, it's going to get multiplied by 3 and it's going to go there. ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने स्ट्रेच की है, उसके बाद आपका ग्राफ इस तरह का लगेगा ऑलरेडी. What do you have to do after this? इसके बाद आप क्या करेंगे इस ग्राफ को to move to this graph on the right side? अब vertically तो कोई मूवमेंट की और जरूरत नहीं है, स्ट्रेच से ऑलरेडी आपकी ये वर्टिकल मूवमेंट हो गई है पूरी. ठीक है, सो यहाँ पे कॉमन एरर क्या होता है कि आप सोचते नहीं है कि स्ट्रेच के बाद क्या होगा. आप बस डायरेक्टली इतना सोचने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये पॉइंट है ए,
ये ऊपर जा रहा है 2 यूनिट्स, तो आपकी वर्टिकल ट्रांसलेशन भी हो रही है. दैट्स नॉट एक्चुअली हैपनिंग हियर. व्हाई? बिकॉज जो स्ट्रेच हुआ है उस स्ट्रेच से आपका ग्राफ ऑलरेडी ऊपर मूव कर गया, तो वर्टिकली और किसी ट्रांसफॉर्मेशन की अब जरूरत नहीं है. बट देन व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग हॉरिजॉन्टली? अब देखें, हॉरिजॉन्टली आप ग्राफ की विड्थ तो चेंज नहीं हो रही है, तो स्ट्रेच तो नहीं है. ठीक है, स्ट्रेच तो नहीं है, बट यू कैन सी वेरी क्लियरली कि अब ग्राफ शिफ्ट हो गया राइट साइड के ऊपर. व्हाट्स दैट शिफ्ट? यू कैन टेक एनी पॉइंट. ये पॉइंट लेट्स से कितने यूनिट्स मूव कर गया राइट साइड के ऊपर? 1 2 3 4 यूनिट्स राइट में मूव कर गया. टेक अनदर पॉइंट इफ यू वांट. ये पॉइंट कितना पॉइंट राइट में मूव कर गया? इट्स मूव 4 यूनिट्स टू द राइट. सो इट्स अ ट्रांसलेशन. It's a translation 4 units to the right. 4 units of graphs right to move kare. But how are you going to describe this? You're going to write its translation with vector 4 0. इसको आप ये नहीं लिखेंगे कि translation 4 units to the right. That's not acceptable. आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो वो उस तरह से वर्ड्स में नहीं लिखना, राइट लेफ्ट अप डाउन, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. The examiner wants a translation vector here. They want a translation vector. ठीक है, और उसको आपने ये भी नहीं कहना it's moving to the right or moving to the left. You have to use the correct terminology. It's a translation. Translation use करना है. ठीक है, और एक column vector लिख के आना. इसमें order doesn't matter. Yes. इस केस के अंदर order does not matter. Why? Because one transformation is vertical, the other is horizontal. Vertical और horizontal के अंदर it doesn't matter. कौन सी आप पहले कर लें, कौन सी बाद में करें. अगर multiple vertical है, then order matters. You'll do stretch first, stretch or reflection first, and then translation in the standard form. And if it's horizontal translations in the standard form, you'll do translation first, and then stretch or reflection. Okay. Yes, Iman, that's correct. If you're talking about vertical transformations, you will think about stretch first. जब ग्राफ से देखना होता है ना, जब ग्राफ से आपको फिगर आउट करना होता है, पहले स्ट्रेच का सोचना है, उसके बाद ट्रांसलेशन का सोचना है. ओके. और अगर हॉरिजॉन्टल आपको फिगर आउट करना है, उसमें पहले ट्रांसलेशन का सोचना है और बाद में स्ट्रेच का सोचना है. ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल में ऑर्डर उल्टा हो जाता है. I hope that makes sense. So that's 4 marks. You'll basically get 2 marks for writing vertical stretch and its factor, and then 2 marks for writing translation and writing down the translation vector. Okay. All right, let's move on. Part B, state in terms of y, f, and x the equation of the graph shown with broken lines. Okay. Y equals f of x was your original graph. इसमें क्या किया आपने? Vertical stretch हो गया with scale factor 3 और stretch factor 3. Vertical stretch में क्या होता है? आप बाहर मल्टीप्लाई कर देते हो फंक्शन के. So basically फंक्शन के बाहर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. ठीक है, जो आपका स्ट्रेच फैक्टर होता है उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो. There's a translation that is 4 units to the right. 4 units to the right. Horizontal transformations के अंदर it's a bit counterintuitive. Right में मूव करते हैं तो माइनस करते हैं, और लेफ्ट में मूव करते हैं तो प्लस करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? It's 3f of horizontal का मतलब है अंदर आपके फंक्शन में कुछ हो रहा होगा, x minus 4. This is horizontal translation. This is a vertical stretch by a factor of 3, and x में से 4 minus किया, that's horizontal translation. 4 units to the right, that's what your function is going to be, the transformed function. ठीक है. All right, let's move on. Question number 6. So abhi tak it's been a fairly straightforward one. Transformation वाली question में maybe if you haven't done enough practice in this, शुरू में मसला होता है कुछ लोगों को, but I hope that makes sense. Okay. Now a curve is such that dy over dx equals 6 over 3x minus 2 whole cube, and a point lies on the curve. A point is moving along the curve, and at A, the y coordinate of the point is increasing at 3 units per second. Find the rate of increase at A of the x coordinate of the point. This is rate of change wala question. Haris, f. Yes, of course, you have to write f. यहाँ पे लिखा हुआ ना f of x function था original. f of x को आपने किसी और function में
रिप्लेस किया ना, सो बेसिकली दो चीजें हो रही थी उस फंक्शन के अंदर। वो दो चीजें क्या हो रही थी? f of x was becoming 3f of x, एक ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, और उसके बाद एक दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही थी? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे? x में से 4 माइनस कर रहे थे। तो ओवरऑल इम्पैक्ट आपके पास क्या हो जाएगा? ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा? दैट्स गोइंग टू बी दिस। f की टर्म्स में लिखते हैं ना, ऑफ कोर्स। अच्छा, a curve is such that the derivative is this and the point A lies in the curve. Let's think about this now. उसने आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया यहाँ पे वर्ड्स के अंदर? उसने कहा the y coordinate is increasing at 3 units per second. How do you write that in terms of the derivative notation? Y का rate of change, that's dy over dt. It's increasing, तो ये positive होगा. dy over dt is 3. ये इसने दिया है. We have to find the rate of increase at A of the x coordinate of the point. हमें find क्या करना है? हमें find करना है dx over dt. dx over dt find करना है. What we can do is we can use the chain rule, right? dy over dt है. ये आपके पास dy over dx already दिया हुआ है उसने. What's dy over dx? आपको evaluate करने की जरूरत भी नहीं है, उसने already derivative दिया हुआ है. That's 6 over 3x minus 2 whole cube. What you can do is you can just use the chain rule. अब x की वैल्यू आपको इनपुट करनी पड़ेगी. उसने क्या कहा? रेट ऑफ इंक्रीज एट ए. पॉइंट ए के ऊपर रेट ऑफ इंक्रीज चाहिए. अब पॉइंट ए के ऊपर आपका x कोऑर्डिनेट क्या है? इट्स 1. सो यू कैन इनपुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 हियर. यहाँ पे इनपुट कर दें, या बेशक चेन रूल में इनपुट करने के बाद कर दें. इट डजंट रियली मैटर, व्हिचएवर यू डू फर्स्ट. मैं यहीं पे अगर इनपुट कर दूं इसको, x equals 1, what do I get from this? I get 6 over 3 minus 2 whole cube. That's going to give me 6. dy over dx जो आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर, that is 6. ये किस पॉइंट की बात हो रही है? This is at the point A. A पॉइंट के ऊपर आपका dy over dx is 6. And now since we need dx over dt, हम chain rule use कर लेते हैं. dx over dt अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे, chain rule कैसा होएगा? First fraction का numerator dx, second fraction का denominator dt, right? And then in the middle, we're going to have the third variable, whatever that third variable is. यहाँ पे dy है. So we've got dy here and dy here. dx over dy. What's dx over dy? dy over dx 6 है. dx over dy is going to be reciprocal of that. That's 1 over 6 into dy over dt. That is 3. And that gives you 1 over 2. That's the rate of change of x with respect to time at that point A. ठीक है? First part में कुछ के chain rule use करना था. And that's what we do here. Okay, let's move on. Now the part B says, find the equation of the curve. आपको derivative given है, आपको y find करना है. आप क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे उसको. इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास एक c आ रहा होगा. You've got a point given. वो input करेंगे, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी. Right? Pretty straightforward, pretty standard question. dy over dx आपके पास है. Let's write that down. That equals 6 over 3x minus 2 whole cube. अच्छा, ये फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करना हमें पेपर 1 में तो नहीं आता. इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको ऊपर लेके जा सकते हैं. राइट, वी कैन से दिस इज 6 into 3x minus 2 whole raised to power minus 3. इसको पावर फॉर्म में हमने लिख दिया. एंड नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस. अंदर वाला पार्ट लीनियर है ना. लीनियर जब होता है अंदर वाला पार्ट, पावर के अंदर वाला पार्ट, वी कैन जस्ट सिंपली यूज द पावर रूल. The constant outside stays as it is. You increase the power by 1, 3x minus 2, minus 3 में 1 add किया, minus 2 हो गया. You divide by that increased power, and you also divide by the derivative of what is inside the brackets, that is 3. This is y. And then you've got plus c, that's the constant of integration. वो आप हमेशा add करते हो whenever you do not have limits in a question. ठीक है, ये हो गया. Now let's simplify this. We've got 2 and 3 in the denominator, 6 here. ये सारे cancel हो जाएंगे. ये minus sign रह जाएगा. ये minus sign यहाँ पे रह गया.
And then we have this power -2, 3x minus 2 को नीचे ले जाते हैं denominator के अंदर, it becomes 3x minus 2 whole square plus c. And now we can't leave it like this. अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे, you won't get full marks. आपको c की वैल्यू फाइंड करनी. c की वैल्यू कैसे फाइंड करें? We know a point that lies on this curve. That point is 1 and -3. We can input that here. So we input 1 and -3 in the function. इसके अंदर input कर दें. Y की वैल्यू -3. X is 1. So in the denominator, we just have 3 minus 2 whole square plus c. And that gives us -3 equals -1 plus c. C equals -2. C की वैल्यू -2 आ गई. Let's just input that back in the function. इसके अंदर वापस input कर दें. We get y equals -1 over 3x minus 2 whole square -2. That's the equation. That's the equation of the curve that we were looking for. ये find करना था. ठीक है? Okay, let's move on to the next one. Question number 7. So now we've got functions. Functions f and g are defined as follows. We've got a function f, we've got a function g. F is quadratic, g is linear. उनके दोनों के domains भी दी हुई हैं. First of all, we have to express f of x in this completed square form. Square complete करना है. That's pretty straightforward. X square का coefficient भी कुछ नहीं है, तो ये तो बहुत आसान होता है. हम क्या करेंगे? We've got x square plus 2x. And now we divide this 2 by 2. क्या आएगा 1. 1 का square इसमें add भी कर देंगे और इसको 1 का square subtract भी कर देंगे. And then we have plus 3 after that. Now these three terms are going to give us a perfect square. First term is x आ गया, second term is plus, and the third term is going to give us 1. We've got x plus 1 whole square. Outside, we've got -1 plus 3, that is just plus 2, and that's the completed square form. That's what you had to do in the first part. That's just one step basically. ठीक है? अच्छा. और उसने क्या कहा है? State the range of f. That's the other thing that you've got to do. Now, how do you find range of quadratic functions? Quadratic functions की range के लिए हम क्या करते हैं? We think of the turning point. Yes, so we think of the turning point. इसके turning point हम कैसे देखेंगे? ये आपके पास ये जब completed square form होती है. Remember आपका standard form क्या होती थी? A into x minus h whole square plus k. उसमें h okay आपका turning point होता था. उससे compare कर लें. That's one idea. Or you just have to flip the sign of the number that's inside there. That's going to be -1. और जो बाहर वाला number है उसको as it is रख लेते हैं. -1 and 2. This is going to be the turning point. ये आपका turning point. Now, is it maximum or minimum? X square का coefficient positive है. So this is a minimum point. ये आपका minimum point है इस quadratic curve को. Now, you can just quickly draw a rough sketch of this graph. And then you can think about this. ये आपका graph है. ये आपका minimum point है, -1 and 2. Now, think of the domain that's given. Domain इसका सोचे बगैर आप नहीं इसका करना. Domain is x less than or equal to -1. X less than or equal to -1. This is the point -1. यानी इसके left side पे आप हो सकते हो. तो left वाला part जो है, this part is valid. Left वाला part valid है. अब इसकी देख लें vertically आपके पास क्या y की values बन सकती हैं. It's basically anything above or equal to this point 2. Y coordinate क्या था इस point के ऊपर 2. तो 2 या उससे ऊपर आप कुछ भी हो सकते हो. So range is going to be y greater than or equal to 2. Or equal to 2. Not just greater than 2. It's going to be greater than or equal to 2. ठीक है? Because यहाँ पे -1 के साथ equality का sign लगा हुआ है ना, तो यानी वो वाला point included है. So we have y greater than or equal to 2. That's the range. Or you can write it as f of x greater than or equal to 2. That's another idea. Okay, दोनों तरह लिख सकते हैं. That's your range of this function. ठीक है? अच्छा. Do I need to scroll up? Yes. Iman, is that okay?
Okay. Now it says find an expression for f inverse of x. We've got the function. Quadratic function का जब भी inverse find करना होता है सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उसका square complete करना पड़ता है. There's no other way to make x the subject otherwise. Square हमने complete कर लिया already, तो हम वो ये वाली form use करेंगे. f of x equals x plus 1 whole square minus 2. Plus 2, sorry. That's the function. और इसमें domain क्या दी हुई है? Domain is x less than or equal to minus 1. Okay. Let's find the inverse of this. क्या process होता है standard? F of x की जगह पे y लिख देते हैं. And that becomes y equals x plus 1 whole square plus 2. Take 2 to the other side. That gives you x plus 1 whole square equals y minus 2. Take square root. Whenever we take square root, we always put plus minus. Do not forget that. So we have x plus 1 equals square root of y minus 2, but we have a plus minus outside. Now take 1 to the other side, and that gives us minus 1 plus minus square root of y minus 2. And now we need to decide whether to put plus there or minus there. ये दोनों आपने कभी नहीं लगाने, या plus होएगा या minus होएगा, ठीक है? How do you decide that? You look at this thing here. X is supposed to be less than or equal to minus 1. X is supposed to be less than or equal to minus 1. ये minus 1 आ रहा है. Minus 1 में हम कोई चीज plus कर देंगे तो वो तो minus 1 से बड़ी हो जाएगी. minus 1 में से कोई चीज minus करेंगे तो वो minus 1 से छोटी होगी. We want something smaller than minus 1. तो हम क्या choose करेंगे? We choose the negative sign there. ठीक है, minus 1 में से कोई चीज minus करेंगे तो फिर वो x की value minus 1 से छोटी आएगी. So we choose the negative sign there, and we have x equals minus 1 minus square root of y minus 2. And now you replace the variables. x की जगह पे आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? f inverse of x. Right side पे आप x variable use करोगे. It becomes minus 1 minus square root of x minus 2. That's your inverse function. All right. So ये plus minus का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे. अगर तो वो plus है तो आपका हो सकता है तुक्के से ठीक हो जाए. But you always should think about it. Plus minus लगाना है और फिर सोचना है कि plus use करना है minus use करना है. ठीक है. अच्छा. Now it says solve this equation. Gf of x equals 13. Gf of x equals 13. Let me write down those functions here again. F of x is इसकी computed square formula लिख लें या वो लिखें, एक ही बात है. चलो, let's write the computed square form. X plus 1 whole square plus 2, and the domain of this function is less than or equal to minus 1. And the other function was g of x equals 2x plus 1, and the domain of this function was x greater than or equal to minus 1. Okay. Let's solve this equation now. सबसे पहले आपको ये composite function निकालना पड़ेगा. You say g of, you can write it like this, g of f of x. So basically g के अंदर आपने f of x input करना है. Right? That's what you want to do. Now there's a common error here कि यहाँ पे x की value 13 input कर देते हैं बच्चे. x की value 13 नहीं है. x की value अगर 13 होती, it would have been like this, g f of 13. Right? It's not that. It's gf of x equal to 13. तो gf of x आप function निकालोगे, उसको 13 से equate करो. Okay? g के अंदर आपने f डालना है. What's f? We've got f on the right side there. That's x plus 1 whole square plus 2. वो input करना है. That equals 13. अच्छा, function g क्या है? It's 2x plus 1. तो basically g के अंदर जहां पे भी x आ रहा है, x की जगह पे you'll just input this whole thing. So we have 2 into x plus 1 whole square plus 2. And then we got this plus 1 outside. That equals 13. If you get confused by this, आप उसकी expanded form use कर लें. You might find that simpler. आप x square plus 2x plus 3 use करना चाहते हैं, वो भी use कर सकते हैं. It's the same thing. इसका बस मुझे ये लग रहा है कि शायद इसको solve करना आसान हो जाएगा because already square form के अंदर है. Let's just try to do that.
2 into x plus 1 whole square plus 4 plus 1 equals 13. Now this thing goes to the other side. The constants are right side pe chale gaye, and they give us 13 minus 5, which is 8. X plus 1 whole square equals 4. And now, rather than solving it like a proper quadratic equation, what we can do is we can basically just take square root on both sides, right? Dono sides square root le le. But when we take square root on both sides, we put plus minus. So I'm taking square root on both sides. Square root lenge to plus minus lagana padega. Now we've got either x plus 1 equals 2 or x plus 1 equals minus 2. The left one gives me x equals 1, and the right one gives me x equals minus 3. But then again, in all functions that involve in all questions that involve functions, you have to be very careful about your answers at the end. देखें क्या domain के अंदर ये दोनों आ रहे हैं. अब domain कौन सी use होगी? We've got two domains given there. एक x less than or equal to minus 1 की domain है function f की. दूसरी domain है आपके पास function g की. This is a composite function जो दोनों functions को मिलाकर बना है. Now you've got to think about this. ये आपको अगर तो याद है, we have discussed this. Domain of a composite function is basically the domain of the inner function. जो inner function की domain होगी, वो आपकी composite function की domain होगी. Inner function कौन सा है यहाँ पे? Function f. जो f की domain होगी, वो आपकी composite function की domain होगी. Now, why is that? Because जो x आपकी input, x आपका input जा रहा है, x input हो रहा है सबसे पहले f के अंदर. तो f को वो f को acceptable होना चाहिए. That's the first thing that we have to apply on the function x. तो जो inner function होगा हमेशा, यहाँ पे inner function क्या है? f. जो इसकी domain होगी, composite function की भी वही domain होगी. तो composite function की domain क्या है फिर? It's x less than or equal to minus 1. This is the domain of g f of x. अगर f g of x होता है, उसकी domain ये वाली होती. जो अंदर वाला फंक्शन होता है, उसकी डोमेन कॉम्पोजिट फंक्शन की डोमेन होती है. सो x has to be less than or equal to minus 1. That means this one is not possible. ये नहीं हो सकता. So we have to ignore this answer. This is not possible. We only have one root here, and that is x equals minus 3. ये आपका सिर्फ एक आंसर होगा इसका. ठीक है? If you don't do this, if you don't reject the other answer, you'll lose 1 mark here. So let me just look at Daniel's question there. Daniel, that's correct. But at this point, we haven't really converted this to an inverse function. अभी तो inverse में convert ही नहीं किया ना हमने. अभी तो हमने inverse में convert नहीं किया इसको. अगर आप inverse में convert करने के बाद देखते हो, then you would do that. Okay? अभी हम inverse में convert करने से पहले देख रहे हैं ना. Inverse में तो हमने convert ही end पे last step पे किया है. अगर हम उसमें पहले देख रहे हैं, तो इसमें हम simply x की values देख सकते हैं. This is going to be quicker. I know when we did this in class, हमने दूसरे method से किया था. हमने क्या किया था? पहले inverse find कर लिया था, और उसके बाद फिर हमने वो सोचा कि अच्छा, जो आपकी original function की domain होगी, वो inverse की range होगी, और फिर आप यहाँ पे आके सोचो end के ऊपर. That's also fine. एक ही बात है. अगर आपके पास end पे यहाँ पे plus minus लिखा होता, फिर आप सोचते कि अच्छा, इस inverse की range कितनी होनी चाहिए? इस inverse की range कितनी होनी चाहिए? This should be less than or equal to minus 1. तो अब यहाँ पे आके वही reasoning यहाँ पे कर रहे होते. तो वो reasoning हमने यहाँ पे करने के बजाय पहले कर ली. Okay? Daniel, I hope that answers the question. तो एक ही बात है, आप बाद में कर लें, वो plus minus decide पहले कर लें. ठीक है? I'm really happy to know that, Ahmed. That's great to know. I hope you do well in your A2 as well, inshallah.
Thank you for reaching out and letting me know. I'm really glad to hear that. Congratulations. That's good, Daniel. All right, let's move on to the next one. Question number 8. Acha, the points A, B, and C are on the circumference of the circle. Find an equation of the circle. Acha, आपके पास 3 points हैं. They lie on the circumference of a circle. We have to find the equation of the circle. How do we do that? It's not a lot of information, but this is where it's going to come in handy if you remember some properties of circles. Let's say this is the circle that we're talking about. We don't know where the center is. Let's say we don't know the center's coordinates. Let's say this is the center. इसने ABC वहाँ पे use किया है. Let's call this O. अच्छा, A कहाँ पर है? A is 7, 1, and then B is 7, 9, और C किधर है? C is 1, 9. अच्छा, A और B points ऊपर कहीं पर आ रहे होंगे. A left पर होगा, C, B right पे होगा. Okay, so it's going to be something like this. A is somewhere here, B is somewhere here at the same level. 7, 9, yeah. अच्छा, so देखें यहाँ पे, it's important to note here. A और B के x coordinates. अच्छा नहीं, sorry, so it's wrong actually. Yes, नहीं आएगा. This should have been something else. B अगर यहाँ पे होगा, तो A जो है वो इधर होगा. Yeah. The x coordinates of A and B are same. That means they are going to be on the same vertical line. Vertically, वो same line के ऊपर आ रहे होंगे. What about the y coordinates? 1 and 9. A आपका नीचे है, B ऊपर है. C point किधर है? 1, 9. तो basically इसका जो x coordinate है, वो उनसे लेफ्ट पे होएगा. और ये अच्छा, so again क्योंकि C का x coordinate आपका कम होना चाहिए था, तो वो इधर आएगा. So we change this again. A और B basically right side पे आ रहे होंगे. A यहाँ पर होएगा, B right पे ऊपर होएगा, C लेफ्ट पर आएगा because इसका x coordinate छोटा है. तो ये हम लिख देंगे लेफ्ट साइड के ऊपर 1 and 9, 1, 9 ये आपका ऊपर इधर आ रहा है. So it's going to look something like this. इस तरह का आपकी फिगर बनेगी. It helps to mark those points slightly accurately, क्योंकि उससे आपके लिए सोचना आसान होगा. ठीक है, सोचना थोड़ा आसान हो जाएगा. Now this is how the points look like. Let's suppose this is how the points look like. Now what we need to find the equation of the circle. इनके coordinates में यहाँ पे लिख देता हूँ. B is 7, 9. A is 7, 1. And C is 1 and 9. This is how the points are going to look like. अब यहाँ पे अगर आप देखें, this is 9, this is 9, same y coordinate. A, B को जो line join कर रही होगी, this is actually a horizontal line. Similarly, this is 7 and this is 7. जो line B और A को join कर रही होगी, this is a vertical line. This is a vertical line. What does that mean? What does that mean about this angle here? This angle is going to be 90 degrees. एक horizontal line है, दूसरी vertical line है. तो जो angle वहां पे बनेगा point B के ऊपर, that is going to be 90 degrees. Right? Yes, that's very good. Remember the property of circle? दो points हैं on the circumference. एक A है, एक C और एक A है. They are making 90 degrees on the circumference. This is only possible if those points lie on a diameter of the circle, on the same diameter of the circle. So ये basically the line होगी AC. This is going to be the diameter. This has to be the diameter. Why? Because ये 90 degrees angle बन रहा है यहाँ पे. क्योंकि 90 degrees angle बन रहा है, वो सिर्फ diameter बना सकता है.
AC is going to be the diameter. Okay. Okay. Now, what do we do then? We can find the center now and the radius. सिर्फ ये figure बनाने से क्या हो गया? Now it's extremely straightforward. आपको दो चीजें चाहिए होती हैं equation of circle के लिए. Center के coordinates. Center क्या हो जाएगा? It's the midpoint of A and C. Center O is basically just the midpoint of AC. We're not assuming this. हमने कोई assumption नहीं लिया यहाँ पे. We're just using that reasoning कि वो 90 degrees है, तो ये diameter होना चाहिए. So इसका center आपका midpoint होगा. इसका midpoint आपका center होगा. Let's find the midpoint now. That's 7 plus 1 over 2 and 1 plus 9 over 2. And that gives me 4 and 5. These are the coordinates of the center of the circle. ठीक है? अच्छा. अब क्या करें? आपको radius चाहिए. Now that you've got the center, आप O से किसी भी point का distance find कर लें. OA find कर लें, let's say. OA is going to be the radius. And that gives you square root of, ये working show करनी है. x2 minus x1, that's 4 minus 7 whole square plus 5 minus 1 whole square. I'm using this point here and this point here, OA. इनमें distance निकाल रहे हैं. या देख लें क्या आता है. 3 square plus 4 square, that's going to be 5. Radius आपके पास आ गया 5. You've got the radius, you've got the center. Standard form क्या होती है? X minus A whole square plus Y minus B whole square equals R square. And that gives us X minus 4 whole squared plus Y minus 5 whole square equals 5 ka square, which is 25. This is the equation of the circle. ठीक है? Yes, definitely. इसमें drawing आपकी अगर अच्छी आप कर लें तो सोचना बहुत आसान हो जाता है. So you can use a compass for this and that will help you think. But again, you're not going to use graphical reasoning in the sense कि आप कहें कि अच्छा मैंने ये length measure की है, इतनी आ गई. You can't do that. Measurement नहीं कर सकते. सिर्फ सोचना है उससे कि आप reasoning किस तरह से करेंगे. क्या reason है यहाँ पे? ये angle हमने क्यों 90 बनाया? ये angle में 90 क्यों बनाया? Because we know कि एक line horizontal एक vertical है. And since that's supposed to be 90, we say AC is diameter. यहाँ पे लिख लें तो बेहतर है. AC is basically diameter. आप लिख सकते हैं उसकी reason क्या है? इसकी reason ये है the angle ABC is 90 degrees. Okay? अच्छा, that's what we do here. अब कभी-कभी इस तरह की क्वेश्चन आप देखेंगे. आपके पास अगर ये इस तरह से डायमीटर नहीं बन रहा होता, it was any other 3 point, let's say यहाँ पर आ रहा होता, उसमें आप क्या करते? There's a standard method that we've got for that as well. उसमें आपको पता है कि chords के mid points जो होते हैं, अगर सेंटर से कोई लाइन आए वो हमेशा उसको कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री से एंगल बनाते हैं. तो उस आइडिया को यूज करके हम दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकाल सकते हैं, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं, उससे सेंटर की इक्वेशन निकल सकती है. आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल वाली जो क्विक रिवीजन वाली वीडियो है. मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट वेल. वो आपको क्लियर होना चाहिए. जो आपका let me just show that to you very quickly. I hope I'm not going to go on a tangent there. कहाँ पे क्या? P1 equation of circle. Yeah, so this is the idea. If you've got any 3 points, let's say मेरे पास कोई भी 3 points है. Yeah, this is better. मेरे पास 3 points हैं, P, Q और R, जो circumference पे lie करते हैं. आपने सर्कल की इक्वेशन निकालनी है. इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या होएगा? आप PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, QR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो, टेक एनी टू कॉर्ड्स फ्रॉम दोस 3 पॉइंट्स, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स निकाल लो. They will intersect on the center. They have to intersect the center because of that property. Okay, line coming from a center that cuts
the cuts a chord at the midpoint, it makes a 90 degrees. तो आप कोई भी दो chords के perpendicular bisectors बनाएंगे वो हमेशा center पे जाके intersect करेंगे. This is a general method that you can actually use for this. Yeah, basically you can just pause here if you want and have a look at this. The method, I've explained this in that video as well. Equation of circle की quick revision वाली जो video है, you can have a look at that if you want. Let me go back there now. It was yeah, we were basically here. Yeah, आपके पास equation of circle आ गई. ठीक है, so once you've drawn the figure, it's fairly straightforward after that. Yes, Arif, yeah. So I just saw your message. That's correct. You can also do that. So दोनों equations के आप perpendicular bisectors निकालें और उनको दोनों chords के perpendicular bisectors निकालें, उनको equate करें, उससे आपके पास center आ जाएगा और फिर आप उसको use करके क्या करेंगे, आप अपना radius निकाल लेंगे और आप equation लिख देंगे. So that also works. That's perfectly okay. ठीक है. All right. These are all the P1 checklist videos that you have there. I just posted them here. I will be trying to add to them in the next couple of days if hopefully I can get some time. So तीन चीजें रहती हैं, function transformations, integration, and differentiation. Function transformations I would definitely want to add. Integration, differentiation थोड़ा सा आसान ही है, but inshallah मैं कोशिश करूँगा function transformation जरूर add कर दूँ उसके अंदर. But you can find all the other quick revision videos on this playlist there. It's going to be helpful. Let's move on. Now it says find an equation of the tangent to the circle at B. Acha. Now that's pretty straightforward. आपके पास circle है. Circle का tangent निकालना है. How do you find that? Straight line के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं. You want a gradient and a point. Point तो आपके पास already है. Point is B. What's that point? 7 and 9. Point के coordinates आ गए. You want the gradient of the tangent. This is point B. इसका tangent जो है वो इस तरह से कुछ होगा. ठीक है. Gradient कैसे आएगा उसका tangent का? Radius का gradient निकालें, OB का gradient निकालें, उसका negative reciprocal कर लें. ठीक है. So find the gradient of the radius OB. Let's find that. y2 minus y1 or x2 minus x1. B के coordinates क्या हैं? 9, 7. It's going to be 9 minus O कहाँ गया? This is O. 9 minus 5. X2 minus x1. 7 minus 4. And that's going to give you 4 over 3. This is the gradient of OB. What about the gradient of tangent then? Gradient of the tangent. That's going to be minus 3 over 4. Tangent gradient आ गया. अब equation लिखते हैं आप simply. That's y minus y1 equals m into x minus x1. Y minus 9 equals minus 3 over 4 into x minus 7. अगर उसने कोई specific form आपसे नहीं मांगी, you can just leave it like this and that's going to be acceptable. आपको इसको simplify करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? इसकी जरूरत नहीं है. इसको simplify करने की जरूरत नहीं है. You can just leave your answer like this. All right, that's your equation. Let's move on. Question number 9. Now it's APGP. It says the first term of a progression is cos theta, where theta is between 0 and pi over 2. अच्छा इसमें आपके पास trigonometry भी आ रही है और APGP भी आ रही है. For the case where the progression is geometric. अब देखें जब इसने wording use की होती है, be careful कि इस part में के लिए उसने कहा हुआ है, next part में ये case आपका change हो जाएगा. ठीक है, so उसने कहा अभी के लिए this is geometric. The sum to infinity is 1 over cos theta. So that the second term is cos theta into sine square theta. Now, what do we know about the first term? We know it's a GP. So we know it's a GP. And GP is, this GP has the first term, cos theta. और उसने आपको बता दिया sum to infinity. Sum to infinity of this GP is 1 over cos theta. Now, what's the formula for the sum to infinity of a GP? आपको formula sheet में लिखा होता है A over 1 minus R. वो formula input कर दें.
we say a over a की value क्या है? A is cos theta, so we say cos theta over 1 minus r, that equals 1 over cos theta. Let's cross multiply. We get cos square theta equals 1 minus r, and r equals 1 minus cos square theta. अब यहाँ पे देखिए sin square theta भी आ रहा है, आप इसको चेंज करके लिख सकते हो. You can say r is equal to sin square theta. Now what do we need? We need the second term निकाल लिए. अब term formula क्या होता है? Again, it's a question in which you are required to show something, तो working show करनी है. इसको प्रॉपर आपने इनपुट करके दिखाना है, डायरेक्टली नहीं लिख देना कि टर्म 2 बस cos theta sin square theta आ गया. You have to show the working. What's the formula for a particular term for a geometric progression? It's a r raised to power n minus 1. Which term do we need? We need the second term. n की जगह पे 2 इनपुट कर दें. a is cos theta into r is sin square theta raised to power 2 minus 1. So this becomes cos theta into sin square theta. That's your second term. ये आपको figure out करना. ठीक है? अच्छा. Let's move on to the next one. For the case where the progression is arithmetic, so now it's an arithmetic progression. So उसमें एक ही part था. Yeah, there's another part there as well. Find the sum of the first 12 terms. हमने MS कर दिया. Geometric वाले case के अंदर उसने कहा find the sum of the first 12 terms when theta equals pi over 3. अच्छा, theta की value बता दिया उसने. Give your answer correct to 4 significant figures. That means they do not even need exact answers anymore. आप decimals में लिख सकते हो. अब final answer आपको चाहिए 4 significant figures में. You have to make sure that you follow that instruction, but that also means कि जो आपकी working होगी सारी वो इससे ज़्यादा accurate होगी. It has to be at least 5 significant figures, the working that you do. Okay. Achha. If you write down any decimal values, they have to be at least 5 significant figures. Sum of the first 12 terms, sum formula क्या होता है GP का? Sn equals a into 1 minus r raised to power n divided by 1 minus r. That's the sum formula for a GP. We know the first term. First term was cos theta into 1 minus r. R is sine square theta. So हमें क्या करना है? Sum of the first 12 terms. So we have sine square theta whole raised to power 12 here divided by 1 minus sine square theta. Or in fact, r की value sine square theta. Sorry about that. This is only sine square theta. This is the sum formula that we've got. हम क्या करेंगे? इसके अंदर अब values input करेंगे. कैसे input करेंगे? Cos theta बाहर है. इसको ऐसे directly इस तरह से लिख सकते हैं. सबसे पहले इसको थोड़ा simplify करके इस तरह लिख लें कि it becomes cos theta into 1 minus sine theta whole raised to power 24. ये power 2 है और बाहर 12 है. तो ये 2 और 12 multiply को क्या बन जाएगा? Sin theta whole raised to power 24. And now you can input those values. ये denominator में क्या आ रहा है? Sin theta का whole square. Sin theta का whole square. अच्छा नहीं, sorry. So मैंने यहाँ पे क्या किया है? So I was doing this correct earlier. मैंने 1 minus r ही बस सही रखा था. It should have been 1 minus sin there. ये ऊपर. Yeah. So thank you for that. This should have been 1 minus sine square theta. ये r की वैल्यू मैंने यहाँ पे डाली थी, इनपुट की थी. 1 minus मैंने स्किप कर दिया यहाँ पे. Yeah. So that's correct now. Sin square theta क्या लिख सकते हैं? You can write it as sin theta का whole square. And now you can input the value. क्या value है? Pi over 3. वो input कर दें इसके अंदर. Cos of pi over 3 into 1 minus sine of pi over 3 whole raised to power 24 divided by 1 minus sine of pi over 3 whole raised to power 2. ये आपने evaluate करना. Now it might actually be easier if you want कि आप अलग से पहले वो calculate कर लेते. That would have been actually easier. R आप अलग से evaluate कर लेते पहले और A अलग से evaluate कर लेते. ये values input करके pi over 3 input करते, A evaluate करते
और r evaluate कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यूज इनपुट कर देते हैं इसके अंदर. दैट वुड बीन मच इजियर. यहाँ पे हो सकता है कोई आपके पास कोई एरर आ जाए. सो इफ यू वांट यू कैन आल्सो डू दैट, बट लेट्स से आपने कर लिया. आप यहाँ पे क्या करोगे, बस वैल्यूज इनपुट कर दोगे. मेक श्योर योर कैलकुलेटर इज इन रेडियन मोड. cos into pi over 3 into 1 minus sine of pi over 3 whole, I think there are two left. 1 minus sine pi over 3 whole raised to power 24. Divided by 1 minus sine pi over 3 का whole square. Now again, it would have been much easier अगर आप पहले से a और r अलग से evaluate कर लेते, उसके बाद input करते. इसमें बहुत chances हैं error होने के if you do it directly like this. ठीक है, so I've done this. I'm getting 1.9366. अब उसने क्या कहा था, 4 significant figures. You're going to write it as 1.937. That's your final result. ठीक है. Okay, that was part 2 of this. Let's move on to the next one. It says, for the case where the progression is arithmetic, the first two terms are again cos theta and cos theta sine square theta. So now we've got an arithmetic progression in which we have the first two terms given. It's an AP now. The first term is cos theta and the second term is cos theta sine square theta. Find the 85th term where theta equals pi over 3. अब टर्म फॉर्मूला जो होता है एपी का, उसमें क्या आ रहा होता है, फर्स्ट टर्म आ रही होती है और डिफरेंस आ रहा होता है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी पड़ेगी और डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा. डू वी नो द फर्स्ट टर्म? उसने बताया है फर्स्ट टर्म इज cos थीटा, a इज cos थीटा. व्हाट अबाउट द डिफरेंस? अब इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लो. डिफरेंस इज cos थीटा sin square theta minus cos theta. If you want to factorize this, if you can do that, you'll get cos theta into sine square theta minus 1. And you could actually simplify this further. You would get cos theta. ये sine square theta minus 1 है ना, तो आपके पास क्या होता है? You can actually write it like this. आपको पता है कि sine square theta plus cos square theta is 1. Sine square theta minus 1 is actually going to be minus cos square theta. तो आप इसको उससे replace कर सकते हो minus cos square theta से. It's going to simplify things for you because you're just going to be left with cos cube theta. ये आपके पास रहेगी. ठीक है. अब उसने क्या कहा है, find the 85th term. Find the 85th term when theta equals pi over 3. Now we won't do the same mistake again. हम यहाँ पे क्या करते हैं, to simplify things, let's just evaluate the first term and the difference. इनकी value find कर लेते हैं. ठीक है, ताकि वो हमारा algebra मुश्किल ना हो जाए आगे. Cos of pi over 3. What's that? Cos of pi over 3 is I think 1 over 2. First term 1 over 2 आगे. Difference is cos cube theta. So cos theta क्या था? 1 over 2. 1 over 2 का whole cube. That's going to give us minus 1 over 8. ठीक है, ये evaluate पहले से कर लें. अब आपके लिए आसान हो जाएगा. टर्म फॉर्मूला वैल्यू इनपुट करें. Tn for an arithmetic progression, that is a plus n minus 1 times the difference. Let's input the value of a here. A is 1 over 2. हमें कौन सी टर्म चाहिए? 85th term. So we're looking for T85. 1 over 2 plus n minus 1, that's 84 times the difference. The difference is minus 1 over 8. And that's going to give you something. Let's evaluate this. 1 divided by 2 minus 84 divided by 8. That gives me minus 10. This term turns out to be negative 10. ये आपको term चाहिए थी. ठीक है, तो अगर वो पहले से input कर लें जो उसने वैल्यू दी हुई है,
That's going to simplify things, simplify your calculations. इसमें error के chances थोड़े कम हो जाएंगे. We could do the same thing in the previous part as well. A और R पहले evaluate कर लेते, तो calculation थोड़ी सी नीचे आसान हो जाती. ठीक है? Okay. Anyway, let's move on to the next question. That's question number 10. The diagram shows a sector ABC, and which is part of a circle of radius A. Okay, so you've got this whole sector. The points D and E lie on AB. We've got this point D, this point E. So the lie on AB and AC, and such that AD equals AE equals K. Okay, well, length उनकी दी हुई है, उसने K times A, where K is less than 1. Okay, K की value 1 से छोटी है. वो आपको नजर भी आ रहा है फिगर के ऊपर, because length छोटी है A से, तो K has to be less than 1. The line DE, now this is important. The line DE divides the sector into two regions which are equal in area. उसने आपको एक relationship दिया हुआ है areas का, जो line DE है, उसके ऊपर एक point आ रहा है, that's a triangle. और उसके नीचे एक point आ रहा है, that's this portion. These areas are equal. These areas are equal. ये उसने आपको एक relationship दे दिया area का, जिसको आप use कर सकते हो to figure out anything that you have to, and the question statements before. Now, it says for the case where angle BAC is pi over 6, उसने angle दे दिया आपको. कौन सा angle? BAC, that's this angle. This angle is pi over 6. That's what they've told us in the first part. Find K correct to 4 significant figures. All right, how do we think about this? If these areas are equal, if this area and this area, if they are equal, what we can actually do is, we can multiply the area of the triangle by 2, and that will be the area of the sector, right? Again, for example, this area को let's say A कह लें, इसको भी A कह लें. What's the total area? The total area is 2 times A. तो triangle के area को अगर हम 2 से multiply कर देंगे, हमें sector के area मिल जाएगा. And that's a quicker way of thinking about this. हम क्या करेंगे? हम कहेंगे area of sector is basically, rather than subtracting from the sector this triangle और फिर उसको equate करें triangle के area से, हम simply क्या कह सकते हैं? Area of sector is 2 times the area of the triangle ADE. ठीक है, triangle को 2 से multiply कर दें, पूरा sector का area आ जाएगा. ठीक है, अच्छा, sector का area कैसे find करें? Half r square theta formula होता है. So we have half radius is a square. Radius is a, so that's a square. Angle is pi over 6. That equals 2 into area of triangle. Triangle के area कैसे निकालें? We have 2 sides and the angle between them, half AB sin C use कर सकते हैं. That's going to be 1 over 2 into KA. इसका square हो गया. Into sine of the angle, sine of pi over 6. This is the relationship that we get. Now let's simplify this. We're going to get a square pi over 12. On the other side, 2 and 2 get cancelled. And we have k square, a square into sine pi over 6. Sine pi over 6 kya hota? That is 1 over 2. Now a square and a square get cancelled. A length है ना, तो a को हम cancel कर सकते हैं, ताकि divide कर दिया उस side पे, ये cancel हो गया. What are we left with? We have k square equals 2 over 12. That's 1 over 6 times pi. ये हमारे पास k square की value आ गई pi over 6 का pi over 6. Now what we can do is we can just take square root. K square equals square root of pi over 6, and we can input plus minus there. But think about this. Ka is the length. A तो positive because A भी length है. तो Ka को positive रहने के लिए K की value भी positive होनी चाहिए. Negative तो नहीं हो सकती K की value. So we only consider the positive value of K, क्योंकि K length को basically represent कर रहा है. तो हमें negative consider नहीं करना. This is what we get, what we are getting. लेकिन उसने क्या कहा था यहाँ पे? 4 significant figures देने हैं. तो आपने exact form में नहीं छोड़ना, इसको आपने answer लिखना है इसमें. ठीक है, उसने कहा 4 significant figures चाहिए. You have to write 4 significant figures. Let's see what that gives me. This is coming out to be
So this is just to be k here, not k square. K की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.7236. This is the value of k. ठीक है, let's move on. Find the general case in which the angle BAC is theta radians. For the general case in which angle BAC is theta radians. अब उसने angle नहीं बताया, उसने angle पहले pi over 6 कहा था, that's no longer relevant here. For the general case, we are given that theta is between 0 and pi over 6. So acute angle है. It's given that theta over sine theta is greater than 1. Find the set of possible values of k. अच्छा, now we still have the same relationship. We know their areas are equal. तो हम वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. सिर्फ डिफरेंस क्या होगा? Instead of using pi over 6, we are going to use theta now. Let's just copy this equation that we had there. तो यहाँ पे अगर दोबारा से यूज कर लें, this was the equation. But now instead of using pi over 6, we're going to use theta here. Okay. Now what happens if we do this? We have half a square theta on the left side. On the right side, we've got k square a square into sine theta. Now again, a square and a square get cancelled here as well. And we get k square equals 1 over 2 into theta over 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास और क्या आ जाएगा? साइन थीटा. ये हमारे पास k स्क्वायर आ गया. ठीक है. अच्छा, अब उसने क्या कहा था? उसने कहा था थीटा ओवर साइन थीटा इज ग्रेटर देन 1. अब यहां से देखें k की वैल्यू तो हम नहीं निकाल सकते ना, बिकॉज वी गॉट k and theta. There are two unknowns and there's only one equation. We can't really find the value of k exactly. k क्या होना चाहिए? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? We can use this relationship that's given there. Theta over sine theta is greater than 1. यहाँ पे theta over sine theta हमारे पास कैसे आ सकता है? We can say 2k square equals theta over sine theta. And now we know ये चीज क्या होनी चाहिए? This should be greater than 1. This should be greater than 1. ये उसने बताया. ठीक है, ये चीज greater than 1 होनी चाहिए. If theta over sine theta is greater than 1, what that means is 2k square जो होगा वो भी greater than 1 होगा, because 2k square and theta over sine theta, they are both equal. If they are both equal, अगर theta over sine theta greater than 1 है तो 2k square भी greater than 1 होना चाहिए, right? And that gives us k square greater than 1 over 2. ये हमारे पास आ गया. And now since we know कि k positive है, k cannot be negative, हम यहाँ पे square root ले सकते हैं. जब आपको पता होता है सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव नंबर्स के अंदर वी आर अलाउड टू टेक स्क्वायर रूट्स इन इनइक्वालिटीज. अदरवाइज इनइक्वालिटीज में स्क्वायर रूट नहीं ले सकते इफ यू अनश्योर के कोई वेरिएबल पॉजिटिव है नेगेटिव है. तो क्योंकि वो इनइक्वालिटी के साइन पे रिवर्स हो सकता है, प्लस माइनस लगाना पड़ता है, तो वो इनइक्वालिटी साइन भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है. अगर पता है पॉजिटिव वेरिएबल्स हैं तो आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड्स के ऊपर. वी गेट k ग्रेटर देन 1 over 4. Sorry, square root लेंगे तो 1 over 4 नहीं आएगा. It's going to be k greater than 1 over square root of 2. Square root लिया दोनों sides के ऊपर. This is what we get, 1 over square root of 2. Now let's just see. यहाँ पे उसने और क्या दिया हुआ था हमें? 1 over square root 2 से बड़ा. That should be smaller. Yeah, that's okay. लेकिन यहाँ पे एक चीज बताइए आपको और. K has to be less than 1. K has to be less than 1. K 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता. So what are you going to say then? Since k has to be less than 1 and k has to be greater than 1 over square root of 2, so we were already given that k has to be less than 1. This was already given. तो अब k की possible values आपके पास क्या हो जाएंगे फिर? It has to be between these two numbers, right? 1 over square root of 2 आपके पास क्या number होगा? Let me just check that. 1 over square root of 2, it's going to be 0.707. So basically वो आपको कह रहा है कि k is greater than 0.707.
and less than 1. ये दोनों चीजें satisfy हो रही हैं, तो आप क्या कहोगे? You can say k is between these two numbers. It's between 0.707 and 1. This is going to be your final set of values for this letter k. ये आपके पास possibilities हो सकते हैं. K has to be between 0.707 and 1. That's your final result. इसका exact form में भी छोड़ सकते हो, decimals में भी लिख सकते हो. Both are going to be okay. Why? Because यहाँ पे कुछ कहा नहीं है आपको, तो आप exact छोड़ दो या decimals में लिख दो, एक ही बात है. लेकिन अगर decimals में लिखेंगे तो at least 3 significant figures लिखेंगे. ठीक है, 0.707. That's the minimum level of accuracy that you need there. All right. So these are the set of values of k that we've got. Question number 11. Bilal, detailed videos, I'm actually in the process of uploading a few things. Equation of circle के ऊपर I have a quick revision video. You can have a look at that, but hopefully in a day or maximum 2, कल मैं कोशिश करूँगा मैं कर दूँ. I'm going to upload a lot of past paper questions, topical past paper questions on the important P1 topics. Important का मतलब है कि जो ज़्यादा मुश्किल वाले topics हैं, उनके मैं past paper topical practice questions post कर रहा हूँ कल और परसों इंशाल्लाह. So उसमें equation of circle के भी बहुत सारे questions, solved questions मैं post कर रहा हूँ. बाकी जो है अनफॉर्चुनेटली पेपर 1 से पहले मैं उसके कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में इसमें बहुत टाइम लगेगा, तो वो भी नहीं कर सकूंगा मैं. बट पास्ट पेपर क्वेश्चन उसके रीसेंट क्वेश्चन मैंने सारे किए हैं in the classes that I teach. I'll be posting their solutions tomorrow or maximum by the 3rd of May inshallah. ठीक है, and they should help क्योंकि उसमें वो सारे कॉन्सेप्ट्स एक दफा कवर हो रहे होंगे. All right, let's look at question number 11. Abdurrahman, have I taught you O-levels at LJ Schoolberg? I can't answer that here, but yeah, you must know the reasons. Let's look at question number 11. I really enjoyed, that was my first school actually, so I really enjoyed teaching. And it's not teaching some classes, but some others not so much. So yeah, O-levels वैसे भी I did not enjoy teaching O-levels a lot. तो बहुत ही basic था और इसमें इतना मजा नहीं आ रहा था. So when I got A-level opportunities, I just left O-levels altogether. Anyway, question number 11. The diagram shows the curve G Fazen, I really do enjoy teaching. That's the only reason I am in teaching. Otherwise, I would be working somewhere else. I really enjoy it, yeah. So that's why I do it. The diagram shows the curve with the equation y equals 9 into x raised to the power minus 1 over 2 minus 4x raised to the power minus 3 over 2. The curve crosses the x-axis at the point A. Find the x coordinate of A. अच्छा, A क्या है? A is the x-intercept of this curve. A is the x-intercept of this curve. ये आपको find करना है. How do you find x-intercepts? X-intercepts आप कैसे find करते हैं? Y की value 0 input कर देते हैं. Just put y equals 0 here. And that's going to give us 9x raised to the power minus 1 over 2 minus 36 x raised to the power minus 3 over 2. Yes, Fazan, I actually particularly like teaching smart kids because then you can have good discussions in class. Otherwise, उसमें मजा नहीं आता कि सिर्फ इस तरह के बच्चे हों जिनको बस क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर निकाल के बस घर जाना हो. I don't enjoy that a lot. But when I get good questions, for example, this is one of my students, Shazeb, who just commented. He asks really good questions in class. That's what I enjoy. तो आप पूछते हैं कि अच्छा ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? So I really enjoy that.
that people want to actually understand के जो भी हम कर रहे हैं उसके लॉजिकल रीजन क्या है. अगर सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने और आंसर निकालने हो, that's pretty boring. मैथ्स बहुत बोरिंग हो जाती है. But yeah, anyway, let's move on to this question. Find the x coordinate of a. 0 equals 9x raised to power minus 1 over 2 minus 36x raised to power minus 3 over 2. ये आपको x coordinate उसका फाइंड करना. अच्छा, क्या करेंगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है. What we can do is we can take x raised to power minus 1 over 2 common here, or 9 common as well. It's going to give us 9x raised to power minus 1 over 2. That comes common outside, and we have 1 minus 4 x raised to power. इसमें से देखिए minus 1 over 2 common ले लिया, क्या बचेगा आपके पास यहाँ पे? minus 1, right? Because minus 1 over 2, ये आपको minus 3 over 2 देना था, हमने सिर्फ minus 1 over 2 बाहर रख लिया. What are we left with? minus 1 there. And now we've got either 9x raised to power minus 1 over 2 equals 0, or we've got 1 minus 4 x raised to power minus 1. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 minus 4 over x equals 0. And that gives us 1 equals 4 over x equals 4. The first one is going to give you x equals 0. Okay, x equals 0. फिर तो आपके पास कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे. In fact, this is not going to give you x equals 0. That's actually wrong. That's not correct. It's 9 over x raised to power 1 over 2 equals 0. यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलता. You don't get any solution from this. यहाँ से आपको कोई solution नहीं मिलता. Because x जाके यहाँ पे multiply होगा. You'll get 0 equals 9, which doesn't make any sense. Basically हो ये रहा है कि x यहाँ पे y जब 0 हो रहा है तो x की वैल्यू हमारे पास infinity भी आ रही है वहाँ पे. Yeah, so that's basically it's representing this. ये आगे जाके ना ये asymptote बन रहा होगा. दूसरी वैल्यू आपको वहां से मिल रही है. But anyway, that's not possible. You don't get anything from this. Right side से आपके पास क्या मिल गया? x equals 4. That should be this x coordinate of 4. X coordinate of a. ठीक है. Hamza, I hope you're all right. क्लासेस में भी आ जाया करें कभी कभी इस तरह. टीवी पे देखते रहते हैं. आदिल, no, there are no restrictions as long as the flow is clear. मतलब ये clear होना चाहिए कि आप पहले क्या कर रहे हो उसके बाद क्या कर रहे हो. अगर आप कॉलम्स में करते हो तो उसमें आप क्लियर होना चाहिए कि आप पहले लेफ्ट वाला कॉलम है पूरा, उसके बाद राइट वाला कॉलम है. अगर आप रोज में कर रहे हो, again you have to be clear कि what you're doing first, what the examiner should see first and what they should see after that. तो आप arrows से represent कर सकते हैं. If you think it's going to be confusing for them, arrows लगा दें कि अच्छा इसके बाद ये वाली वर्किंग है, उसके बाद ये वाली वर्किंग है. ठीक है. So उसमें कोई restriction नहीं है. So it should be very clear. And the second, yes, classwiz is absolutely allowed. Most candidates actually use that, and that is allowed. Classwiz allowed. Okay. Let's move on to the next one. Part B, find the equation of the tangent to the curve at A. Tangent की equation निकालनी है. Tangent की equation कैसे आती है? You need two things, right? You want a point. You want the point, the coordinates of the point. Point A हमारे पास क्या है? That is 4, 0. And you need the gradient of the tangent. Gradient of the tangent is the gradient of the curve at that point. जो curve का gradient है वही आपके tangent का gradient होगा. Curve का gradient कैसे निकालते हैं? Differentiate करके. ठीक है. So we have y equals 9 into x raised to power minus 1 over 2 minus 4x raised to power minus 3 over 2. ये आपके पास y है. What we do is we differentiate it first, dy over dx. 9 is a constant that can just stay outside here. और आप इसको simplify करके लिखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. You can write it like this. First, 9x raised to power minus 1 over 2 minus 36x raised to power minus 3 over 2. Let's write it like that first. And then you can differentiate 9 as it is.
and then you multiply by the power. -1/2 से multiply किया. Power gets reduced by 1. -1/2 -1, that is -3/2. -36 into the power, that's -3/2. Subtract 1 from the power, that's going to be -5/2. Let's simplify. We get -9/2 x raised to power 3/2. And what is this going to be? 18 into 3, that is 54. Yeah, 54. Plus 54 over x raised to power 5/2. ये आपके पास आ गया dy/dx. What do you want now? You want the gradient at the point A. A के ऊपर gradient चाहिए, तो आप क्या करेंगे? A का x coordinate input कर देंगे. What's the x coordinate of A? That's 4. ये 4 जाके input कर दें उसके अंदर. ठीक है. Let's input x equals 4 here. जब ये करेंगे आपको gradient मिल जाएगा उस point के ऊपर. Can somebody do this calculation for me? 4 input करते हैं तो क्या आता है? -9 divided by 2 and 8 plus 54 divided by 2 and 32. Yeah, so I'm getting 9/8. Is that correct? 9/8. Right, that's 9/8. This is supposed to be the gradient at A. Gradient आ गया. अब equation लिख सकते हैं. Y minus y1. What's y1? Y1 is उसके point क्या था हमारे पास? Point was 4 and 0. This was the point. Y minus 0, that equals m, that's 9/8 into x minus x1. x1 is 4. That's your equation. ठीक है, ये 0 है तो इसको 0 equation खत्म कर देंगे. Say y equals this thing. That's the equation. All right. ये आपके पास equation आगे tangent. Let's move on. Next, we have to find the x coordinate of the maximum point of the curve. अच्छा, maximum point इसका कहीं पर आ रहा होगा, maybe somewhere here. Maximum point कैसे find करते हैं? We put the derivative equal to 0. ठीक है, derivative ने पहले निकाल लिया. The derivative is this thing. This is the derivative. इसको 0 से equate कर देता. We get 0 equals -9 over 2x raised to power 3/2 plus 54 over x raised to power 5/2. Now we need to get rid of the fraction. तो हम क्या करेंगे? x raised to power 5/2 के साथ multiply कर देंगे. Right? जो higher power है उसके साथ पूरी equation को multiply कर दें. x raised to power 5/2 के साथ multiply कर दें. अच्छा, x raised to power 5/2 से multiply करेंगे तो क्या होएगा? We have -9 और denominator में क्या आ रहा है? x raised to power 3/2. So when you have x raised to power 5/2 here, 5/2 minus 3/2, what are we going to be left with? X only. ठीक है, this is what we have here. And then when this gets multiplied by x raised to power 5/2, ये cancel हो जाएंगे. We are only left with 54. ये equation को solve कर लें. It's a linear equation. We get 9x/2 equals 54. And that gives us x equals 108/9. That should be 12. X की value 12 आ गई यहाँ से. Yeah, we only needed the x coordinate. ये आपको चाहिए था. We don't need the y coordinate. अगर उसने y coordinate भी मांगा होता, हम जाके input कर देते इसको. इस equation के अंदर, we could get the corresponding y coordinate of that point as well. That's the x coordinate of the maximum point. X equals 12. Now it says find the area of the region bounded by the curve, the x-axis, and the line x equals 9. X-axis, curve, and the line x equals 9. What's the line x equals 9? X equals 9 is going to be a vertical line. Agar ye 4 hai, ye 8, 9 is going to be somewhere here. Basically, we want this region. ये area चाहिए. ठीक है? क्या करेंगे? Integrate करेंगे, limits input कर देंगे 4 से लेकर 9. That's all you have to do. This is area between the curve and the x-axis. What's the formula for that? It's not given in the formula sheet, remember? Area between a curve and the x-axis, that's integral of y with respect to x. Limits डाल देंगे x की.
And that's it. Now, what's the function? The function y is 9 into x raised to power minus 1 over 2. अच्छा इसका simplified form use कर लेते हैं. 9 into x raised to power minus 1 over 2 था. और minus 36 x raised to power minus 3 over 2. Minus 36 x raised to power minus 3 over 2. This is the function. We want to integrate this and then input the limits from 4 to 9. 4 से लेकर 9 limits input कर देंगे and you'll get your result. Okay. अच्छा. Let's integrate. Integrate कैसे करेंगे? This is simple power function. Power में 1 add कर दें, divide कर दें increased power से. That's all you have to do here. 9x raised to power minus 1 over 2 plus 1, that's 1 over 2 divided by 1 over 2. Minus 36 as it is, that's a constant वैसे आएगा. Power में 1 add किया, minus 1 over 2 हो गया, divided by that increased power. That's what you get. Now the limits are from 4 to 9. But before we input the limits, it's better to simplify this. Errors कम हो जाते हैं उससे. We have 18 x raised to power 1 over 2. This 2 goes to the numerator and gets multiplied by 9. Then we have this minus, ये plus हो गया. 2 goes to the numerator and becomes 72. X raised to power minus 1 over 2 था. If you want, you can take this to the denominator. It becomes x raised to power 1 over 2. अब इसके अंदर input करते हैं values. ये limits input करके दिखाना जरूरी होता है. You have to input 9 ones, 18 into 9 raised to power 1 over 2 minus 72 over 9 raised to power 1 over 2 minus 18 into 4 raised to power 1 over 2 minus 72 over 4 raised to power 1 over 2. Okay, let's see what we get from this. First bracket evaluate कर लें. 18 times 3 minus 72 divided by 3, and that gives me 30. The first bracket. ये वाला स्टेप जरूर शो करना होता है. लिमिट्स सब्स्टिट्यूट करके दिखानी होती है आपको. Okay, and we subtract from that 8 into 2 minus 72 divided by 2. That's minus 20. So that's 30 minus 20, and this is giving me 30 plus 20, which is 50. Okay, there is something wrong there because this is not that high there. Okay, so there is some careless error somewhere again. Can somebody spot it? I thought we were done, but we are not. 9x raised to power minus 1 over 2 minus 36x raised to power minus 3 over 2. Okay. हमने सही कॉपी किया. Limits are from 4 to 9. Limits भी हमने सही इनपुट किया. 9x raised to power 1 over 2 divided by 1 over 2 minus 36x raised to power minus 1 over 2 divided by minus 1 over 2. That's fine. We get 18 into this plus 72. It's fine until this point. Input limits input करके calculation में क्या मसला है? 18 into 3 minus 72 divided by 3. That's 30. 18 into 2 minus 72 divided by 2. Okay, this is actually giving me something else now. And that should be 0 here. There's some error here, which I am unable to spot.
Okay, yeah. So basically, this was plus, or niche, for some reason, I have written minus. I don't know why. But yeah, that happens sometimes. And that happens in the exam as well. So you have to be careful. This was actually plus, and this was also plus. ये दोनों plus होने चाहिए थे. ठीक है, let me correct that. What do I get from this now? 18 into 3 plus 72 divided by 3. This is giving me 78 now. Okay. We subtract from that the other bracket. 18 into 2 plus 72 divided by 2. That is 72. And that gives us 6. That's the area. This is what we wanted. Okay. Okay. That's the area that we have at the end. And that's it. This is our final result. That completes this paper. Again, it was, I think out of all the papers that we've done until now, this was probably the easiest, I think. इसमें कोई भी एक भी question ऐसा नहीं था which was, very tricky. Maybe this one, इसमें अंदर K के terms में कुछ आ रहा था. You might find this tricky. लेकिन yeah, it was fairly easy overall. क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं थी. Let me just check. Yes, Hamza, thank you. I spotted that eventually. इसका थ्रेशोल्ड क्या आ रहा है हमारे पास? इस पेपर का थ्रेशोल्ड was 55 out of 75. That's a pretty low threshold for an A. Again, ये COVID वाला batch था. So you can expect now to be you can expect this threshold to be now around 59-60. अगर इस तरह का हो तो इससे तो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए because this was fairly easy this exam. Okay, so that's it for today. That was March 2021, paper 1. We're done with this. Tomorrow, inshallah, we are going to be doing October, November 2020 papers. Okay? We'll definitely be doing one, but hopefully we'll be doing selected questions from 2 others as well. Let me just see हम कौन सा कर रहे होंगे कल. October, November 2020 का हम कर रहे होंगे paper 1 variant 1 inshallah. ये पूरा paper करेंगे, and hopefully if we get time, we'll have another session in which we're going to do selected questions from these 2 papers, from the other 2 components, 1, 2 and 1, 3. इसमें से कुछ selected questions कर रहे होंगे जो मुश्किल questions होंगे. ठीक है, that's the plan for tomorrow. I'll tell you the time. It's not going to be the same time for the next few days now. Time change हो जाएगा. I'll confirm that. YouTube पे I'll schedule the session so you can find out from there, or WhatsApp पे भी. Those of you who have WhatsApp groups with me, I'll also be posting the updated time on WhatsApp. All right, so that's it. I will see you again tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Yes, Daniel. And Fazan, yeah, I'm here. I'm just ending the YouTube stream and I can answer your questions then. Daniel, do you have a question related to the paper or something else? जी बताएं, कौन सा question? Fazan, just give me a minute. Let me just answer Daniel first. Guys, question, paper पे कोई question है? Daniel, should I unmute you? Let me see. जी, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मैंने बस एक जनरल कॉन्सेप्ट का पूछना था. जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसमें जो डिफरेंस होता है वो मतलब सेकंड ऑर्डर का हो सकता है, सिर्फ एक ही ऑर्डर का होता है? नहीं, सेकंड ऑर्डर तो अरिथमेटिक नहीं रहता. सेकंड ऑर्डर वो तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बन जाता है. जब ओ लेवल्स में आप करते थे वो तो क्वाड्रेटिक सीक्वेंस बन जाता था ना. फर्स्ट डिफरेंस ही सेम होना चाहिए. अच्छा, तो वो अर्थमेटिक ही होता है फर्स्ट डिफरेंस? बिल्कुल, वो लीनियर सीक्वेंस बनता है ना. लीनियर सीक्वेंस है अरिथमेटिक सीक्वेंस. वो फर्स्ट डिफरेंस इसमें कांस्टेंट होना चाहिए. सेकंड डिफरेंस वाला केस आपका ए लेवल्स में नहीं है. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ठीक है, यही पूछना था सर. थैंक यू. ठीक है, ओके.
No problem. All right, let me just end the stream now, and then we can answer the questions.